Okay, so hi guys, this is Gamingpro and आज के इस बैटल रॉयल पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दीपांशी से। डॉबी इज लाइव जो अभी गॉडलाइक की नई कंटेंट क्रिएटर बनी है, पहली फीमेल कंटेंट क्रिएटर। उनसे जानेंगे चीजें क्या हैं क्या नहीं, क्या वो कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचती है, उनके फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में क्या क्या उनके विचार है फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये वाला जो बैटल रॉयल पॉडकास्ट है, दिस इज गोना बी एक्सट्रीमली अमेजिंग। मेक श्योर करना कि आप लोग पूरा देखें एंड वेल 900 के सब्सक्राइबर्स का हम लोगों का गोल है, वहां तक भी अपने को पहुंचना है। सो let's actually begin. So first things first, thank you very much Dipanshi for being a part of this Battle Royale podcast, and this is a series जहाँ पर मैं India international coaches, analysts, content creators को लेकर के आता हूँ to have just a slight conversation with them to know about them and obviously where they're heading with the contents and or esports जो भी चीजें चल रही हैं. So first things first, congratulations for joining Godlike as a content creator. How are you feeling? Oh, I'm feeling very good. And nervous too because it's my first time joining an org and doing content creation. So yeah, for BGMI. या आई गेट इट, बट देन आपके स्ट्रीम्स काफी रिकमेंडेशन में भी आया, काफी बार देखा मैंने भी, एंड ऑब्वियसली काफी सारे लोग होते हैं आपके स्ट्रीम्स पर अगर हम लोग बात करें. सो वो कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रीमिंग एंड ऑल, हाउ डिड यू एंटर अप दिस सीन एंड लाइक कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चला, क्या चीज? Actually, I wanted to do like content creating and compy too from past 1 year because when I started playing games. But then obviously with my studies going on, I can't manage the compy scenario and the studies. So I thought, why not just go for content creation? But again, I was not having the perfect PC or the device to play या on. So या I waited for a some timing so I can just get, and then I started doing that. Yeah. It's very interesting. I don't know why from past 2 to 3 years I love to do content creation. So yeah, that's why. सो लाइक जो स्टार्ट था कंटेंट क्रिएशन का, was that from PUBG Mobile as well? Because उस टाइम 3 साल Yeah. पहले it was like, Yeah. It so was it's on a craze. Yeah. so it started off from PUBG Mobile only. PUBG only. Yeah. All right. And joining a very big or very famous or godlike जैसे कि हम लोग बात करते हैं, it's a very huge thing, it's a very big thing. लोगों का सपना होता है कि इतने बड़े और के साथ वो अपना नाम जोड़ सकें, एसोसिएट हो सकें. And also, how do you see this as an opportunity for your growth, for their growth, like simultaneous growths and all? For my growth, I think I'll get a good opportunity and recognition, obviously, and joining this big org. Like I was not at all expecting ki my first org, which I'm going to join, or this can be my last, first or last, yeah. So I was not expecting this would be godlike, but again, I'm very happy, and I think I can get more opportunity, good opportunity, and I'll get to know how to interact more with the audience because yeah, I know the basic things but I don't know how the scenario or gaming scenario goes on, Yeah, yeah. like who is in the org or in the this gaming, they knows better. So I'll obviously get good knowledge and yeah, and I for the organization I don't know how will they get benefit from me. I don't know because I really don't know how the things work in here, but Yeah, I yeah. think it'll work on the brand basis. I guess the brands will contact because I'm the first female content creator, so that Yeah. would be very, I think so. But That's what then I think. I don't know about. या बट देन जब ये अनाउंसमेंट का पता चला, वंस यू गॉट टू नो अबाउट इट, तो लाइक क्या प्रेशर फील हुआ था? व्हाट वर द इमोशंस जो कि सबसे पहले माइंड में है कि गॉड लाइक्स फर्स्ट फीमेल कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर मिली है? मतलब जब मेरे को अप्रोच किया आया बिकॉज़ मेरे को अल्फा ने सबसे पहले कॉन्टैक्ट करा, अल्फा आईजीएल गर्ल्स की। या तो मैं मेरे को वो मेरी फ्रेंड थी, तो मतलब इतना भी नहीं बट ठीक है, हम गेम फ्रेंड्स थे। तो मेरे को लगा क्यों मज़ाक कर रहे हो यार मेरे साथ मैं ही मिली हूँ क्या? वैसा वाला। बट पहले आई थॉट कि मज़ाक में कर रहे हैं, बट देन दे वर लाइक नो वी आर सीरियस, वी वांट टू ऐसा टेक यू, एंड तो उसके लिए फिर आई वाज़ लाइक ओके फाइन, एंड देन आई वाज़ लाइक पता नहीं कैसे करूँगी बिकॉज़ ऑब्वियसली एक ऑर्ग में जॉइन करते हो तो एक्सपेक्टेशंस हर ऑर्ग की अपनी-अपनी होती हैं। तो आई डोंट नो हाउ विल आई बी, बट ओके फाइन, विल वेट एंड सी। एंड कंटेंट क्रिएशन चलो वो एक साइड पर हो जाता है, बट जो पबजी मोबाइल, बीजीएमआई, हर एक चीज है, वो एक अलग पिलर पर जाती है. दैट ऑब्वियसली इज द ई स्पोर्ट्स जो कि हमारे रीजन में हमें देखने को मिलता है. सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, लाइक आई वांट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक कंटेंट क्रिएटर ई स्पोर्ट्स को किस तरीके से देखता है. व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ई स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड हाउ डू यू सी इट?
Oh, I don't know about others, but for me, like obviously content creation is something like you have to entertain people and all. Hmm. But people don't take it as in like seriously that they knows how to play and all. But I think m- in my point of view, content creation is also like you have to be very creative in that. Yeah, So it's a tough task. And again for the esports one, it's growing in India day by day. Yeah, we need to do some changes and all for the environment. As yeah, yeah, everyone knows, हाँ थोड़ा yeah. टॉक्सिसिटी ज़्यादा है एंड एवरीवन फाइट बाय लाइक ऑर्ग के बीच में या प्लेयर्स के बीच में इतनी फाइट नहीं होती होगी जितनी ऑडियंस के बीच में होती है बट ठीक है वो Yeah. वो थोड़ा सा वो हो जाए तो आई थिंक दैट विल बी वर्क बेस्ट हाँ, या बट देन बात हो जाती है ना कि ऑडियंस के इमोशंस थोड़े अलग रहते हैं हर गेम को। आई मीन क्रिकेट आई की डोंट बात हो गई, नो हर चीज को मतलब लेकर के। आई थिंक दैट इफ अगर मैं वैसा कुछ कहूँ तो वो कंट्रोवर्शियल हो नहीं 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 जाएगा नहीं, मैं बट मानता हूँ, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। या हाँ, थोड़ा इंडिया इंडियन नॉट इंडियन मतलब एवरी ऑडियंस का अपना इमोशंस होता है एंड आई थिंक एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा-सा वो चीज़ अगर पॉजिटिव वे में एवरीथिंग विल गो ना देन अच्छा रिस्पॉन्स होगा और ज़्यादा। एंड यू नो वंस यू स्टार्टेड गोइंग फॉर दिस, अभी जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट है, राइट? सो या क्या सोचा आपने कि आगे विल यू गो फॉर परस्यूइंग अ जॉब, लाइक विल यू गो फॉर अ जॉब, या फिर अभी इसी चीज को आप अपना एक करियर मोटिव बनाना चाहती हैं? एंड वन मोर क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टूडेंट आर यू? स्टूडियस स्टूडेंट? a ऑलराइट। little. I actually am very like interested in research and all. So मेरा बचपन से it was like कि I want to do in research and all. I want to become a scientist and all. So मेरा like ऐसा ही था कि medical micro because biology is my favorite subject and I think मेरा बहुत good hand है उसमें लोग इन प्रैक्टिकल्स एंड ऑल सो मेरे को जब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज मेरे को ऐसा कुछ करना था जो थोड़ा कॉमन ना हो मतलब नहीं होता हो तो आई वेंट फॉर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड या मतलब मेरे को अब भी अभी भी ऐसा भी राइट नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स इन माय मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सो अभी parents तो obviously they are like you have to do you are doing this content creation but they are like you have to do job you don't have need to cut off your field and all they want कि मैं थोड़ा या थोड़ा पढ़ती रहूं चाहे आई करूं गेट पर इट। थोड़ा थोड़ा so the I am like okay fine I'll do one thing कि I'm going to do YouTube and content creation too but apart from that I'll also do ऐसा sort of job or I'll just get an education or something I'll be in touch of the studies so I अभी I haven't decided कि इन फ्यूचर मैं पूरा ऑल डे यूट्यूब करूंगी या फिर बट आई थिंक आई विल नॉट ऐसा कट ऑफ माय स्टडीज एंड ऑल सो या I mean, if it comes down to, you know, me understanding the medical sides, मुझे सिर्फ ग्रीगर जॉन मेंडल का पाइसम सटाइवम एक्सपेरिमेंट ही याद आता है, जो कि यू नो हम लोगों के टाइम पर ऑब्वियसली होता है, बट स्टिल हाँ यू नो मूविंग फॉरवर्ड। सो जैसे हम लोगों ने इन सब चीज़ों की बात करी, कंटेंट क्रिएशन में आकर के व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील यू हैव लर्नड एज अ क्रिएटर जब आपने ग्रो किया? ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपने समझी हैं ओवर टाइम? Oh, I think the most important is like I have to like understand the emotion of the audience. I don't know if my nature was like I don't, I just ignore. Okay, okay, fine, whatever goes on. Matlab, I don't, but now I went into like BGMI and when I started streaming and all, I think I have to respect other people like emotions too because I know it's not harmful for me or it's not bad for me, whatever. But at least लाइक यू कांट ऐसा किसी को भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो पहले मेरे को ऐसा हाँ। लगता था कि अगर ठीक है आप बोल रहे हो बोलो बट मेरे को उस चीज में अगर मेरे लिए वो चीज अच्छी है तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगी बट अभी राइट नाउ आई थॉट कि मेरे को सामने वाले के भी इमोशंस या एटलीस्ट सुनना चाहिए बात तो अभी वही है द मेन थिंग इज दैट वो एंड अगेन कंटेंट क्रिएशन में दैट वाई कि हाउ टू यू नो टॉक विद पीपल बिकॉज आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन मैं इतनी जल्दी नहीं हो पाती हूँ तो अभी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश कर रही हूँ I mean, so do you feel कि like इन सब चीजों में YouTube हेल्प करता है? जैसे कि आपने बोला you're an introvert person, opening up to people, connecting to people, and how did this barrier, like, you know, how you're crossing this barrier? Oh yeah, definitely it is working because अभी I am meeting new people like in a form of chat only obviously मेरी audience के but हाँ मतलब I am learning कि ठीक है ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे भी होते हैं how to deal with them कैसे आप बात कर सकते हो तो वो और कभी कुछ गलत कर देती हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारे बिहाइंड दी यू नो जो Uh, लोग नहीं देखते वो हेल्प कर लेते हैं कि ऐसे करना चाहिए यू हैव टू डील विद तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा
खुली हूँ मैं थोड़ा-सा, बट या अभी है लॉन्ग वे। जी। या एंड कमिंग डाउन, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं इनफैक्ट जिनको कंटेंट क्रिएशन स्ट्रीमिंग वगैरह में घुसना है. इज देयर हुँ। एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड से कि दीपांशी, या फिर अगर यूट्यूब नेम से बोला जाए डॉबी, बोलना चाहेगी उन लड़कियों को? बिकॉज पेरेंट्स को कन्विंस करना, सोसाइटी की चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं. आई वुड से लाइक स्पेसिफिकली हमारे इधर ही देखने को मिलता है, कोई अगर अच्छा खेल रही है, खराब खेल रही है, तो ऑडियंस भी आकर के बोल के चले जाती है कीबोर्ड के पीछे से, दे जस्ट स्पीक. सो what should a girl look forward to once she is starting off the content creation right now? If she's starting content creation in YouTube, first thing is obviously they have to be consistent. आई डोंट नो, लोगों को लगता है कि एक दिन एक हफ्ते करो, दूसरे हफ्ते करो, मतलब हर हफ्ते एक-एक करो तो हो जाता है, बट that's not how YouTube algorithm works. Yeah, So yeah. you have to be consistent. And the second thing is that obviously haters will come. If haters definitely will come जी. मतलब आप कुछ ना भी बोलो बुरा ना, तब भी वो आएँगे. So you have to ignore them. You just have to ignore them. बाकी तो आई डोंट नो, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का बहुत सारे गर्ल्स को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन का ये मतलब है कि यू हैव टू बी बहुत अच्छा प्लेयर, आपको हम्म. होना ही है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू आर ओके ओके और इफ यू आर गुड एट मेकिंग पीपल लाफ, तो आई थिंक दैट वर्क्स So it's इन द it's गेम. uh, it's more or less about the entertainment part जो कि Yeah, yeah. I किया can जा say सकता. that. Yeah, matlab, that is one of the part, entertainment. But if you're a good gamer too, you can also showcase your skills. So yeah, it works both. Matlab, people generally, people what people think is like, if you're not a good gamer or if you're not good at playing games, I don't think so. You'll be good at content creation, but that's not true. All Yeah. right. But talking about people who play very good games and all, do you have any favorites in the esports department? कोई players, team तो खैर अब पता ही है, देखिए godlike हो गई, but कोई players या कोई ऐसे, and like what are the things that you like about those players overall? Be it male, female, anyone? Oh, in the female one, I really love Rebel. I don't know why. Yeah, Rebel is yeah. one of my favorite because she is also good at content creation. And Alpha. Oh, Okay. if you'll see Alpha, she's very good at punches. Yeah, she's very good at that, and also in puns too. So Alpha and Rebel, because game sense obviously, and then male. I don't think so. Like I don't have to even say it's Jonathan always. For me, it's Jonathan always. Uh, He is the best player I know. Like Abhi right now, Goblin is also. Oh, I have seen Goblin playing very well. Matlab, didn't knew about him. I knew about when he was in Insane. I know that he's yeah, a yeah. good player, but अभी I think Soul में जाने के बाद the skills वो ज़्यादा improve हुई है, ऐसा मेरे को लगता है. मतलब he is shining more. So yeah, he can be a good competition. But for me, it's always Jonathan. So I yeah, mean, see, Jonathan is amazing to be honest, and Goblin yeah, is insane. No pun yeah, intended out on that. yeah. But then again, Apart from yeah. apart from that, these two. I mean, अगर है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत No, वाली no. बात Apart from these two, ऐसे तो फिर there are many player like नहीं. Okay. underdog में अभी there is one K18. I guess yeah. K47, K47. K40, Ketan is 40. तो like क्या हाँ. Ketan is a vlogger, I guess. Yeah. Oh, sorry, sorry. I was confused. K47, yeah. Yeah, FS K47, K47, yeah. yeah. Underdogs में and उसके अलावा I don't know why I feel कि Z God and there is one more player. मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है. उनको मतलब आई थिंक इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ वेरी ग्रेट प्लेयर. Okay. आई डोंट रिमेंबर द सेकंड. मेरे को अभी आएगा Any ना तो आई team, like, I mean, मेरे को टेक्स्ट करना, मैं ऊपर कहीं ना कहीं डलवा दूंगा कोई वो हाँ, ठीक है वो No worries about that. No worries about that. But वो then, Dipanshi, what do you think in the content creation, Godlike and all? What's next for you? Like, अभी तो देखिए आपकी streams and all चल रही हैं, but is there anything जो कि आपने future के लिए सोच रखा है with respect to the contents, with respect to any new changes around your streams or anything that we might just, witness or like something? या फिर you're going with the flow? Like, how are you हाँ, planning your YouTube for the future? no, Abhi, right now I'm not planning everything. I'm just going with the flow. I don't know what, I don't think about the future, ki what will I'll do or what will happen. It's just like what I'm going to do Abhi right now and Hmm. what can be its action or the plan I can do to take it forward. So Abhi, I have started streaming. It's been only past 2 months.
So Yeah, yeah. abhi I've started my YouTube from past 2 months only. So abhi right now I'm doing streaming only BGM. But in future I want to play more games and all. I have to explore more, and I think I'll be doing vlogs too. I don't know मैं किस किस की नौकरी खाने वाली हूँ, but sorry अभी से I mean, see, नौकरी खाने से अच्छा आप बोल सकते थे कि कोलैब करने वाली हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब people so, okay, Yeah, I fine, get both. it. I get it. I get it. I get My choice of bad or worse, No, very no, no, no. valid. I get it. I get it. But then again, this is a very good funny segment. But still, moving forward, जैसे कि आपने इन सब चीजों की बात करी, अभी recently हम लोगों का एक टूर्नामेंट होकर गया था BMPS. Yours truly was casting on that as Mhm. well. And अगर BMPS से बात करी जाए, the competitives and all, what do you think about the new emerging teams? Because उस tournament में, if you saw, there were so many teams. So Yeah. एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आप उनका गेम प्ले देखते हो, बिकॉज ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स तो बहुत भयंकर तरीके का खेलते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स उतना नहीं, बट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स अलग लेवल का खेलते हैं. सो Mhm. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल द न्यू एमर्जिंग टीम्स? Oh, they're doing very good. Especially there's this guy from Big Brother Esports, Scream. स्क्रीन, या. ओह! बहुत ज़्यादा, मतलब एवरी जो भी टीम मेरे को ऐसा लगता है जो सेमी से फाइनल्स में नहीं आई, कोई बात नहीं, बट आई थिंक सो सेमीज़ तक भी पहुँचना इज़ अ बिग थिंग। और सारी अभी जितनी भी इमर्जिंग टीम्स है, दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी, वेरी गुड, आई डोंट नो व्हाई। मतलब दे आर गिविंग ऐसा कॉम्पिटिशन कि आई डोंट आई डोंट थिंक कि दे वर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द T1 लॉबी, ऐसा लग ही नहीं रहा था। मतलब दे वर गिविंग फुल ऐसा खतरनाक वाला टक्कर। या But then, before we just wrap all of this up, is there any word of wisdom, anything that you would want to talk to you about the fans, the family, the people who are supporting you? Because मैंने देखा कल के दिन का, जब ये obviously जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है उसके कुछ दिन बाद जाएगा, बट आपका अनाउंसमेंट एंड सब चीज आया था, सो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छे कमेंट्स एंड ऑल्सो, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू टॉक टू अबाउट द पीपल? Oh, no, I just want to thank them because, yeah, it's all because of them only. Because अगर वो लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, they are giving me views and all. They are watching me for hours and all, and that is why YouTube is recommending me in the section. So yeah, I Yeah. am very thankful to them, and I think yeah they'll always support me. Abhi kal also in my stream, when I joined this like Godlike, so there were many like my audience were from different supporting different teams. So I was like, please आप लोग अलग लड़ना, इधर मत लड़ो यार, इधर support करो. So they were very positive in that way. I think my audience is very positive. मतलब if out of 100 there is only one out of 100 or 200 there will be only one hate comment. So I think my audience is very positive in that, and I always make sure कि सब लोग ना आपस में ऐसा अच्छे रहें. So I make sure that. So yeah, I think yeah. Well, that's actually really, really good. And with all of these things, thank you very much, Dipanshi, for giving out your valuable time onto this one. And hopefully, maybe someday in the lands or someday, in the upcoming tournaments or somewhere, we'll obviously, meet, have a chat and all those things. But thank you very much for giving out your valuable time, and all the very best for all the things with Godlike and future. Thank you so much. Thank you, Ocean. वेल, सो ये था पूरा का पूरा पॉडकास्ट. अगर आप लोगों को पसंद है तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा था. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम, एंड पीस आउट गाइस. हैव अ रियली अमेजिंग डे. टेक केयर. बाय बाय. मौका टाइम पास, तेरा फ्यूचर होगा इन द स्ट्रीट्स. देख हमने टाइम पास की बना दी इंडस्ट्री. चिल करके छापा पैसा, मिल गई जैसे ड्रीम जॉब. मैं ही नहीं, मेरे जैसे स्क्वाड में है 3 और. देख मेरे साथ स्क्रीन के उस तरफ रखे तू पैर. मालूम नहीं चलेगा रात से हो जाती कब दोपहर. प्यार हो या गाली यहाँ सब कुछ पड़ता मुंह पर. तभी लाइफ वाली गेम में हम रोज करते लेवल ऊपर.